All right, we'll kickstart this edition with some news just coming in, and this is from Maharashtra, where Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has responded to Uddhav's scathing attacks, fires Uddhav a frustrated person jibe. Fadnavis says frustration affecting Uddhav's mind. Uddhav an Aurangzeb fan club member is what he said. उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। All right, so Devendra Fadnavis is responding to what Uddhav Thackeray has said. Essentially, Uddhav Thackeray called Devendra Fadnavis a bedbug. Fadnavis has now responded to Uddhav's jibe, saying that he is a frustrated leader himself. Remember, a war of words has been going on, with Uddhav Thackeray making a scathing attack against the Home Minister and also against Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis. Fadnavis says Uddhav an Aurangzeb fan club member. Political war in Maharashtra heating up ahead of assembly elections here. Describing Minister Amit Shah as a political heir of Ahmed Shah Abdali, Shiv Sena chief and former Maharashtra CM Uddhav Thackeray launched a scathing attack on the BJP. He said those who went all the way to Pakistan to eat the birthday cake of the then Prime Minister Nawaz Sharif should not teach Hindutva to his party. I'm going to go straight across to Ram Kadam, BJP leader, who's joining us this evening. Thank you so much for your time. How do you look at this war of words that is underway? A bedbug is what the Deputy Chief Minister of Maharashtra is what Uddhav Thackeray has said. Uddhav Thackeray has also said the Union Home Minister is in fact, he also went on to attack the Union Home Minister, talking about the fact that he's a descendant of a political heir, rather, of Ahmed Shah Abdali. See, whatever our Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said is absolutely right. Mr. Uddhav Thackeray has been frustrated and he's been trying to hog limelight. And at the same time, he's been endorsing one thing, that the entire Hindu vote bank is shifted to BJP and Eknath Shindeji's Shiv Sena. Now, Mr. Uddhav Thackeray is banking on only a certain segment of one of the society, one of the religion. And that's the reason why he is being trying to appease them. Because the Hindutva is absolutely abandoned by Uddhav Thackeray. It has been seen in several different occasions. और हिंदी में एक कहावत है, जो मन में और जहन में होता है वही जुबा पे आता है. तो जुबा पे ये जो सारे नाम आ रहे हैं, ये उनका हिंदुत्व नहीं है. ये तो पूरी तरह से मति भ्रष्ट हो गई है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन के इसमें इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है. पर एनीवेज, वी विल टीच हिम अ राइट लेसन ऑन द राइट टाइम व्हेन द असेंबली इलेक्शंस विल टेक प्लेस. All right, I'm going to thank you, Ram Kadam, for joining in with your views on what has now been said, not just by the Bharatiya Janata Party, by Devendra Fadnavis, but also by what Uddhav Thackeray had to say against Amit Shah. A series of reactions coming in. Let's take a look. अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत. अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता. आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय. अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं. एक तर तू राहशील किंवा मी राहीन. आणि इकडे मला माहित नाही, माझ्या पायाशी एक कलिंगड ठेवले. काही जणांना वाटलं मी त्यांना आव्हान दिलं. मी म्हणजे कोण आणि तू म्हणजे कोण हे समजून घेतलं पाहिजे. मी म्हणजे माझा संस्कारित महाराष्ट्र आणि तू म्हणजे महाराष्ट्रावरती दरोडे टाकणारा दरोडेखोरांचा, टोळक्यांचा पक्ष जो आहे, तो अख्खा पक्ष
देखणाला कधी आव्हान नाही देत. देखणं अशी अंगठ्याने चिरडायची असतात. त्याच्यामुळे कोणाला तरी वाटलं की त्यालाच बोललोय. मग त्यांनी सांगितलं माझ्या नादाला लागू नका रे. तुझ्या नादाला लागण्या एवढ्या कुवतीचा तू नाहीच आहेस. औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो. औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं. और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने. अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं. उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो. जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो. पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो. और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो. आपको शर्म आनी चाहिए. मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है.